Hello everybody, you're watching NDTV as we continue tracking the ghastly murder of Raja Raghuvanshi in Meghalaya. Fresh details have emerged in this case, the murder of an Indore-based businessman who was allegedly killed by his own wife, Sonam Raghuvanshi. Now this is the story of a honeymoon in the hills that turned into a chilling plot of betrayal and murder. Raja Raghuvanshi's decomposed body was found in a gorge in Meghalaya, and now his wife, Sonam, has confessed to masterminding the killing, allegedly along with 3 others. That's the latest we know from police sources. Sonam's brother Govind has said no apology is enough for a family that has lost a member. Sonam was educated, brought up in a conservative family. She dreamt of having a corporate life, but as life would have it, she was confined to a family business, and then a traditional arranged marriage followed. From wedding vows to a brutal end in less than 2 weeks, the case has gripped the nation with its shocking twists and calculated cruelty. It would have been a month to their wedding anniversary today, a day of celebrations. One of them is dead and the other one is an accused who has now confessed to the crime. What really drove a young bride to plan her husband's murder with such cold precision, and who else knew about this? That's what we discuss in the course of the next 23 minutes. We have with us Arpit Chauhan. He is the cousin of the victim Raja Raghuvanshi. Thank you, Ankit, हमसे बात करने के लिए. मेरा पहला सवाल, आई नो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर द फैमिली. आज ही एक अपडेट आया है कि सोनम ने कन्फेस किया है कि वो इस क्राइम का हिस्सा थी. आप सब शुरू से जस्टिस की बात कर रहे थे. आपको क्या लगता है कि आज के बाद क्या जस्टिस की उम्मीद है? हाँ दीदी, ये जानकारी मिली है हमें मीडिया के माध्यम से, और वहाँ पुलिस आला अधिकारी ने कहा है कि सोनम ने कन्फेस किया है कि मेरी प्लानिंग थी और मैंने ही सब कुछ करवाया है. तो ये अच्छी बात है कि उसने ये करने के बाद भी कन्विंस कर लिया, मतलब अपने आप से मान लिया कि ये सब मैंने करवाया है. अर्पित जी, आप जो हैं विक्टिम के जो हैं कज़न हैं, और आप थोड़ा सा हमें राजा रघुवंशी के बारे में बता सकते हैं. कैसे व्यक्ति थे, क्या करना उनको पसंद था? मैडम जी, राजा जो व्यक्ति था ना, एकदम हम कहते ना मासूम शाय, मतलब उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं, बस वो अपने में परिवार में मस्त, दोस्तों में मस्त, हंसना, मिलनसार और मस्ती करना, नोटी टाइप, ऐसा मतलब व्यवहार था राजा का. और घूमना भी पसंद था राजा को, ट्रेकिंग टाइप से ऐसा. अर्पित जी, सोनम रघुवंशी से भी तो आपकी मुलाकात हुई होगी, शादी का माहौल था. उनके बारे में आपको क्या याद है? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ. सोनम से मैं शादी के पहले 2 बार मिला हूँ. इवन मैं और राजा हम दोनों गए थे जब शादी की, जो मेरे भाई ने शेरवानी पहनी है ना, आपने फोटो देखे होंगे, वो हम तीनों चारों ने मिलके पसंद की है. मैं खुद राजा के साथ था, सोनम थी. और जब भी ऐसा नहीं लगा, वो बहुत हंसमुख, मिलना जुलना, बात करना, ऐसा ऐसा कभी इंटेंशन फील नहीं हुआ कि सोनम दिख कुछ रही है और होगी कुछ. ऐसा कभी फील नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल. अच्छा, तो आपको कभी फील ही नहीं हुआ कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था? लेकिन सगाई से शादी तक का जो टाइम था, फरवरी से लेके मई तक, इस दौरान आपकी जब बात होती थी आपके भाई, आपके कज़न से, तो वो क्या आपको बताते थे? क्या वो खुश थे? क्या कभी उनको ऐसा लगा कि सोनम से उनकी बात ठीक से हो नहीं पा रही है, कि वो पूरी तरह से शादी में इंटरेस्टेड नहीं है? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि उन पे भी कोई दबाव था? 10 फरवरी 2025 को इन दोनों की सगाई हुई थी. उनके घर पे हम लोग गए थे, परिवार परिवार के लोग गए थे. वहां पर रिंग सेरेमनी नहीं थी, रोका था, मतलब फाइनल करना थी, ये रिश्ता पक्का हुआ है. और वहीं पे बैठ के उनके पंडित जी ने डेट निकाली थी 11 मई 2025 की. तो ठीक है, हमने भी उसमें एग्री किया कि वो जल्दी वाला था, लेकिन ठीक है, करना था. और ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है. और शादी सगाई के बाद राजा ने कई बार फोन भी लगाया बात करने के लिए. होता है ना कि रिश्ता पक्का होता है तो इंसान खुश होता है कि मेरे जीवन में कोई नया इंसान जुड़ा हुआ है इतने टाइम से. तो फोन लगाना, हाय हेलो गुड मॉर्निंग टाइप से, कि क्या कर रहे हैं, क्या दिनचर्या है और आपकी प्लानिंग क्या है, शादी में हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, महिला संगीत, हल्दी, सगाई, ये सब ड्रेसअप के बारे में बातचीत करना. तो उनका ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता बराबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, राजा ने सुबह 11 बजे फोन लगाया तो रिस्पॉन्स नहीं, शाम को फोन आना कि हाँ बोलो क्या बात है, आपने फोन लगाया था. तो राजा बोलते इतने फोन लगाया सुबह, अब रिस्पॉन्स? तो बोले मैं काम में व्यस्त थी. राजा ने शिकायत भी की थी, कम से भी, घर पे भी, कि
बात करना चाहता हूँ, बात नहीं हो पाती है। तो समझा है कि ठीक है, ये हम ये समझे थे कि होता है कभी कभी, कोई लड़की ऐसी होती है ना कि एकदम से इंसान जीवन में नया आया है, तो तब समझ सकते हैं कि मतलब मानवता के नाते हम लोग भी, नेचर होता है इंसान का। तो हमेशा लगा कैजुअल कि ठीक है, लड़की शायद एकदम से घुल मिल नहीं पा रही है, ऐसा अचानक से इंसान नया आया है तो कैसे बात करना क्या नहीं। बाकी ये नहीं पता था कि उसका इंटेंशन क्या था, बात क्यों नहीं करना थी। राइट। अर्पित जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है कि राजा को भी कभी कभी ऐसा लगा था कि सोनम बहुत ज़्यादा फ़ोन पर अवेलेबल नहीं थी उनसे बात करने के लिए। आजकल हम ये भी देखते हैं कि अरेंज मैरिजेस में भी फैमिलीज इंसिस्ट करती हैं कि कपल्स मिलें एक दूसरे को ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े। क्या सोनम और राजा की मुलाकात होती थी शादी के पहले, सगाई के बाद? और जब क्या इसके बारे में आपकी कजिन ने आपसे कुछ बताया था? क्या कभी उनको ऐसा लगा था कि जब वो मिलते थे तब क्या सोनम ने भी उनसे कोई बात शेयर की थी? सगाई के बाद शादी के बीच में 2 ढाई महीने का वक्त था। राजा ने कहा भी, राजा भाई को मूवी का भी शौक है, हम लोग मतलब मूवी जाते हैं देखने, महीने में 1 2 मूवी तो हमारा कंपलसरी फिक्स था, मतलब देखना इस टाइप से। तो राजा ने कहा, मूवी लगी थी, मूवी का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कि मैं इस बार सोनम के साथ जाता हूँ। मैंने, अच्छी बात है, नया रिश्ता है, आप सोनम के साथ जाइए मूवी देखने। तो सोनम को मूवी का बोला है कि सोनम मूवी चलते हैं, तो बोले नहीं, मैं, मम्मी पापा अलाउ नहीं करते, मैं नहीं जा सकती हूँ अकेले, इस टाइप से। तो राजा ने कहा ठीक है, किसी और को भी ले लो साथ में। बोले नहीं, अलाउ नहीं होगा ऐसा कुछ करके। उसने मना कर दिया मूवी देखने से भी, कि इसे नहीं जा सकते। मिलना बहुत कम हुआ, मतलब राजा सोनम से ऐसे अकेले नहीं मिल पाए। या तो हम मार्केट गए शॉपिंग के लिए तब मिल पाए, ऐसे नहीं मिल पाए। तो 2 बार जब आप शॉपिंग पे गए थे तभी तभी जो है राजा और सोनम एक दूसरे से मिल पाए। ये बताइए कि रिश्ता जो है कैसे तय हुआ था? क्या राजा के ऊपर भी परिवार का दबाव था कि अरेंज मैरिज करना है और इसी लड़की से शादी करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, हम जब इन सब चीजों को देखकर फ्लैशबैक में जा रहे हैं, हम परिवार एक एक मेंबर, तो हमें लग रहा है कि लड़की के मन में पहले से ही सब कुछ माइंड सेट था कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। अच्छा। और शादी के दौरान जो टाइम था, 2 3 दिन जो थे, आपको लगा कि कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्लानिंग तो ऐसे लग रहा है इन्वेस्टिगेशन से कि तब से शायद शुरू हो गई थी। सोनम की फैमिली का कॉन्डक्ट कैसा था? क्या वो भी चिंतित थे सोनम को लेकर? नहीं, ऐसा राजा के ऊपर कोई दबाव नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था। हमारी जो फैमिली है ना, वो फ्रेंडली है, फ्रेंडली इन द सेंस कि ऐसा बोलते हैं कि बेटा आप देख लो, लड़की आपको अच्छी लगे, आपको शादी करना है, जीवन में आपको रहना है। तो हमारे यहाँ ऐसा दबाव नहीं है कि हम जो बोलेंगे वही करना है। बस ये था कि हाँ, समाज में लड़की, रघुवंशी रिश्ते की एप्लीकेशन है जिसमें रघुवंशी जो परिवार के लोग हैं वो लड़के लड़की ढूंढते हैं, आपस में रिश्ते तय करते हैं। तो उस एप्लीकेशन के माध्यम से राजा भाई ने लड़की को ढूंढा, सबको दिखाया, देखा, बोले हाँ ठीक है। उन लोगों ने भी पसंद किया राजा भाई को, वो भी 2 बार घर आए, हम लोग भी उनके घर गए सारी बातें करने। तो इस प्रकार से रिश्ता तय हुआ था ये। अच्छा। तो सोनम की फैमिली से भी आपको कभी लगा नहीं कि वो चिंतित थे सोनम को लेकर? और मेघालय की जब बात करते थे तो इसकी प्लानिंग किसने की थी? क्या आपको इसके बारे में पता था? इंटेंशन बिल्कुल नहीं लगा कि सोनम दबाव में है या परिवार ने दबाव बनाया है, ऐसा। मतलब ओरा ऐसा बना हुआ था कि सब खुश लग रहे थे, सब एंड तक ओरा ऐसा बना था, बिल्कुल लगा नहीं हमें। ये सब घटना घटित हुई तब हमें लग रहा है फ्लैशबैक में जाके कि ये सब कुछ पहले से तय था सोनम की तरफ से। राइट। और मेघालय की जब बात करते हैं तब आपको क्या लगा था कि किसका प्लान था? और अभी आपके क्या डिमांड्स हैं सर, जबकि सोनम ने पुलिस सोर्सेस के हिसाब से कन्फेस भी किया है इस क्राइम को लेकर? हाँ, बात हुई थी ना शादी के पहले, जैसे कि राजा कजिन ब्रदर हैं, तो एक दोस्ती के नाते भी हम लोग हंसी मजाक करते हैं, हर व्यक्ति करता है कि राजा आपकी शादी होने वाली है, कहाँ जाओगे, प्लान टाइप से। तो बोले, हम लोग ने 4 5 दोस्तों ने मिलके बात भी करी थी ऐसे कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। तो राजा ने पहले तो कश्मीर जाने का प्लान था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है वहाँ एक पुलवामा अटैक हुआ, तो वो जगह कैंसिल की। फिर ये था कि ठीक है, अभी शादी हुई है, थोड़ा टाइम बाद रुक के जाएंगे। शादी को थोड़ा सा परिवार में लोगों से मिलना जुलना, नए नए लोग आएंगे घर पे मिलने के लिए बहू से। तो अचानक से ही सोनम जब 12 तारीख को घर आई, और 15 के आसपास सोनम जब मायके गई, है ना, उसके बाद उन्होंने सडनली प्लान कर लिया कि हमें मेघालय जाना है। राजा भाई ने 2 1 दिन पहले मुझे कहा कि मैं मेघालय जा रहा हूँ, दर्शन करना है और वहाँ हनीमून के लिए। तो ठीक है, अब उन्होंने सडनली टिकट भी बुक कर दी सोनम ने, और सेंड कर दी कि हम दोनों की फ्लाइट की टिकट है।
तो मेघालय जाने की प्लानिंग सोनम की थी और बहुत जल्द उन्होंने ये प्लान किया था। अपने मायके गई थी शादी के बाद और उन्होंने आके कहा था कि सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया था और राजा रघुवंशी इस बात पर जो है वो मान गए थे। सर ये बताइए कि आपके परिवार ने बहुत कुछ झेला है, ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है आप लोगों के साथ। अभी आपको क्या लगता है कि आपके क्या सजेशंस हैं, थॉट्स हैं, डिमांड्स हैं? आपको क्या लगता है कि सोसाइटी को, पुलिस को किस तरह का बर्ताव जो है आजमाना चाहिए ताकि ऐसे क्राइम्स ना हो? हम ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे छोटे भाई राजा की हत्या में शामिल है, इन लोगों ने जघन्य हत्या की है। इस प्रकार से तो कोई इंसान नहीं करता है। इन सबको फांसी से बदतर सजा हो, वो कानून के द्वारा मिले। जिससे कि मैं आपके चैनल से एक अपील करना चाहता हूँ भारतीय समाज को, युवाओं को जो इस उम्र में है, उनसे मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं इस प्रवृत्ति के जो किसी और से प्रेम करते हैं और परिवार के दबाव में किसी और से विवाह कर लेते हैं, तो कृपया करके उन्हें रोकें। जिससे कि भविष्य में ऐसी कोई सोनम ना आए, न ऐसा कोई राजा महाराजा आए। हम ये प्रार्थना करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और इन लोगों को इतनी बदतर सजा मिलना चाहिए जिससे कि भारत के इतिहास में ऐसा कोई करने के पहले 10 बार सोचे। राइट, थैंक यू अर्पित जी हमसे जुड़ने के लिए. That was the victim's cousin Arpit Chauhan joining us on NDTV. Let me also now tell you a little bit about the characters, the people involved in this bizarre episode and what really made them do what they did. Now the accused here, Sonam Raghuvanshi, was once a bright student from Siddhi in Madhya Pradesh. She had dreams of getting an MBA and building a career. She was brought up in a conservative family and she led a regimented lifestyle. But she was also someone who helped her father expand her plywood business because the family preferred her working within the confines of their business, not outside. Eventually, they found a match for her, Raja Raghuvanshi, a businessman from Indore. The marriage happened through a community portal, and because she was Manglik, the family also wanted a groom who was Manglik too. Now, Sonam played the role of a quiet, dutiful daughter-in-law who would keep fast for her fiancé and also diligently participated in all the shopping activities in the run-up to her wedding. They didn't meet that often, that is Raja and Sonam, but they always met as part of family get-togethers. And let's also talk a little bit about Raja now. The victim, Raja Raghuvanshi, 29-year-old husband of Sonam Raghuvanshi, someone whose murder was planned by his own wife, his newly wedded wife. He was the youngest of 3 brothers in a business family from Indore in Madhya Pradesh. He was part of Raghuvanshi Transport, a business providing buses to educational institutions. Described by family and friends as quiet, sincere, deeply rooted in traditional values, he was not in a rush to marry and he trusted those who are close to him. He was someone who loved watching movies and he was looking forward to a life with Sonam. Now, the couple, like I said, didn't meet much even after the engagement, but Raja would often call Sonam to talk to her. Those close to him say that he was smitten and he was fulfilling her wishes and even agreeing to a one-way honeymoon trip to Meghalaya. And this was despite his mother's reluctance. And there's a third character in this story, Raja Kushwaha, a billing executive who once worked in Sonam's father's plywood factory. Raj was from the same Siddhi neighborhood as Sonam, and their connection reportedly began with routine business interactions. Sonam's family members say that Raj was like a brother to Sonam, but there are also reports that suggest that Raj and Sonam could have had a relationship that Sonam's family was not supportive of. There's no clarity on that yet. But what we know so far is that Raj stayed behind in Indore while the couple traveled to Meghalaya, and he was tracking their movements and allegedly coordinating with hired killers remotely. Police believe that he was instrumental in planning this murder, transferring money to the killers and also staying in touch with Sonam throughout the crime and also after that. So was Sonam a victim of suppressed resentment, societal pressure, or did she knowingly script this cold-blooded betrayal from the start? Crime is a crime, and that is what we discussed today. Let me bring in my guest now, Dr. Ranjana Kumari, Director of CSR Chairperson, also Women Power Connect. We also have Dr. Deepak Raheja. He's a Director and Chief Psychiatrist at Hope Care India. We have Ambar Zaidi, who's a social activist, and we have Dr. Shailendra Srivastav. He's a former DGP of Madhya Pradesh. Thank you all of you for joining me on NDTV. Ms. Zaidi, to you first. A crime is a crime. I know everything is being looked at from the gendered lens. Now, there's far more attention on crimes committed by women, which I think is really unfair. But does this case also reflect a deeper sense of, in some ways, suppressed agency amongst women in traditional households? Or do you see this purely as an individual act of cruelty?
See, there are multiple. I think we have to understand this particular case in layers, and there are many. There could be many reasons behind such mindset and the personality Sonam has. We can also say that she might have a split personality disorder because she was, planning the wedding also, and on the other hand, she was plotting the murder of her would-be husband in future, the Raja Raghuvanshi. According to police, Sonam, shortly after marrying the man chosen by her family, Raja Raghuvanshi, became involved in a conspiracy that led to her husband's untimely and suspicious death. And we need to understand the motive behind this entire the episode we are discussing today. The clandestine relationship with one of her own laborer, Raj Kushwaha, a man who was earning merely 15-20,000 a month, and the relationship she kept under wraps that has raised numerous questions, not only about Sonam's intention, but also the man's role in the crime. Was he, willing accomplice, or just a pawn in a larger, more sinister scheme? Because Right. We could find out later on in the investigation also that investigators, they are not ruling out the Right. motive, a more complex motive, we should say, according to the some sources, that the man might not be the ultimate goal of her affection. There could be Absolutely. So some there are other many man. layers to this. Dr. Of Ranjana course, of Kumari course. Amber is pointing out to something that we've been talking about. There are very different layers to people's personalities. But what warning signs should families or partners look out for when a person appears, in some ways subdued or emotionally distant during major life events like marriage? Because, you heard what the cousin of this victim is talking about, that she would not receive calls. She would be very late in responding to calls. And, she would not go with him for movies. And she would say that, I have a very busy day and my family won't allow this. What are the warning signs that men or women need to look out for, especially when their partner seems a little distant? Well, Sudha, the most important part of this whole story, which is unfolding in a way the media is kind of, already in a very, very strong way blaming her for what happened. But we should look at, certainly crime is a crime, and you very nicely said that. But most important thing to look at it, what really happened to her life. She was really, in my opinion, like many, many girls we know who come to us after wedding, the crisis that starts after wedding. In this extreme case, she got him murdered, of course, along with her boyfriend or whatever her I think important thing is that she was torn between the pressure of the family to get married to a decent marriage, and also someone who was the employee of the same family's company and who she was in love with. I think this is what is lack of agency of girls, and the marriage system in India is doing to a lot of girls, because in our marriage system there is absolutely no question of you denying the choice that the family makes for you. And even if you can and you will deny, you, and in this case she had the pressure of the boyfriend on the other side. So I feel that of course she is a she what she has done is absolutely unthinkable, is absolutely we should not tolerate such things in our society, because a lot of these things will send message that the girls who are getting married are planning murder of her own husband whom she got married with. I think these are the things which will send very, very strong signals in the society like India. But another signal which should be sent is that you have to give agency to the girls. They must be able to decide about their own life. Right. They should be able to choose a man that they want to marry. And in 90% of the cases, Indian families do Do not not even allow till that. date Yeah. allow that. Absolutely. That's very well said. Dr. Raheja, very important points that both our female panelists have pointed out. Ms. Zaidi pointed out this one thing about a woman planning the murder of her husband, and also taking part in all activities related to marriage, shopping. What kind of psychological factors drive these kind of crimes is what I would like to understand. So I would think there's possibly even a higher level of manipulation, because it doesn't seem from the facts that have emerged that she was coerced into this marriage and then she resorted to the turn of events as they happened.
it's possibly that she was instrumental in participating in making this marriage happen, where in her mind she had already begun to plot that it might be easier for the family to accept the lover if she became a widow. So I agree with Dr. Anjana when she says that there needs to be more communication. We need to respect the choices, because had she had the faith that if she spoke about the lover and he'd be accepted by the family, she wouldn't have resorted. But the fact that she's participating in all the rituals, she's playing a character where she's believing that everything is going to fall exactly in place. So there is no room that both of them, who possibly the principal plotters, believed that things could go wrong. Now, in that shared madness, who was influencing who more is difficult to say, but they possibly were living a dream where they imagined their life, believing that everything was just, the way she's fasting for the family and the husband, the way she participates in the wedding, but also the red flags, as you had also mentioned, were so visible because her heart was never in the marriage. This was a big plot. Whether she was instrumental in creating that plot or was she being coerced in the marriage, but the red flags were very visible, and somebody needed to notice that. And unfortunately, this unassuming, innocent man who was weaving his life with his beloved, with his wife, gets slaughtered in the manner that he does. It is very sad that we need to pick up those. And if you do a more deeper retrospective analysis of the personality of Sonam, they might not be criminal background, but the criminal mentality might be more deeper holes that we may be able to discover, because it is not impromptu that somebody agrees to participate in a crime where you are cold-bloodedly planning and conceiving to kill somebody. That's very important. It's easy to actually, look at this as just a simple crime, but like our panelists have also been talking about, that there are multiple layers to this which need to be also understood. Mr. Srivastav, how do law enforcement agencies decide premeditation versus spontaneous crimes, like Dr. Raheja was also talking about? There's a lot of discussion about how this crime was planned and how there was brutal planning and micromanagement that happened. But how is it even possible for police, across states to keep a check on these kind of crimes? This is a very planned murder case. There are two things. One is the planned, other one is the sudden grave provocation. In this case, it is a criminal conspiracy designed much before the actual crime was committed. There are two things important. The couple belonged to Indore, Madhya Pradesh. Honorable Chief Minister holds the home portfolio and is the in-charge minister of Indore also. Indore people have a lot of vibrancy. They have a lot of civic understanding. They know their rights, and you know that Indore is #1 city as far as cleanliness is concerned. They take pride in being Indori. They have a different ecosystem. With due respect to other districts also, other places also, but Indoris, they take a lot of pride in being Indori. They mounted a lot of pressure on police. Honorable Chief Minister spoke to Union Home Minister and he wanted the case to be investigated by the CBI. Meghalaya being a well-known tourist destination, it was matter of pride of Meghalaya also. So government also immediately to protect its image, protect its sanctity, because they have responsible tourism mission going on. So they also acted very swiftly. There was seamless cooperation between Madhya Pradesh police and Meghalaya police. And that is why you have seen this investigation. The diligence of all these police teams also showed results completely out of time. Thank you, all of you, for joining me on this broadcast. Sorry, Mr. Srivastava, I had to cut you short. We have to wrap up now. As the investigation unfolds, what remains clearly is one chilling question. Was this a tale of emotional suffocation that erupted into violence, or the mask of tradition hiding something that is far more sinister? A crime is a crime and every criminal deserves punishment. Either way, it forces us to look closer at the cracks that seemingly perfect homes also have, and the silences that sometimes lie beneath all our crimes. With that, it's a wrap on the show. More news and updates on the other side.